Good morning, students. So, we are studying economics chapter 5 and it is on the end. Today we will complete the chapter. So, what we have studied till now is the definition of money, barter system, drawbacks, forms of money, that is fiat money, fiduciary money, full-bodied money and credit money. And also we studied supply of money, means availability of money with people. Its measurement is P plus DD plus OD. I hope you have learned. And also we studied net demand deposit and gross demand deposit, term deposit and demand deposit. Today we will study from page number 139, in which a ray diagram is given about the measurement of money supply. I am going to read it for your revision. M1 is equal to, there are 3 points given: currency with the public, demand deposits of the people with the commercial bank, and other deposits with reserve bank. And under other deposit with reserve bank is included demand deposit with reserve bank of public financial institutions like NABARD, demand deposit with reserve bank of foreign central government and central banks, demand deposits of international financial institutions like IMF, International Monetary Fund, and World Bank. Now our topic is who supplies money, which is very much clear till now, and after reading it, it will be more clear to us. It says suppliers of money include Central Bank of the country, RBI in India. RBI is the Central Bank of India. Do you know what is Central Bank? Central Bank is the head of the bank, head of the banking system in a country, which controls all other banks, which also issues license to the other banks, and directions they also give to the banks time to time. Supplier of money include Central Bank, that is RBI, commercial banks, and the government also. I told you government is also a supplier of money. In India, RBI is the principal supplier of money. RBI issues currency on the basis of minimum reserve requirement. RBI has to maintain a minimum reserve to issue currency. We'll study about it. Under this system, Reserve Bank maintains a minimum reserve of rupees 200 crore in the form of gold and foreign security. Of this reserve, value of the gold must be rupees 115 crore. So, it is compulsory for RBI to maintain a minimum reserve of 200 crore in the form of gold. अगर RBI को नोट्स इश्यू करना है कभी भी, तो RBI के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होना चाहिए, जिसके अंदर भी गोल्ड का प्रोपोर्शन 115 करोड़ से कम नहीं हो सकता. मतलब RBI को कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है अपने पास हमेशा, और टोटल रिजर्व होता है 200 करोड़, जिसके अंदर फॉरेन सिक्योरिटीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट के बॉन्ड, डिवेंचर, वहां की सेंट्रल बैंक के डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज मतलब यही होता है शेयर्स एंड डिवेंचर, जो कि ऑथेंटिकेटेड हो, जो कि फॉरेन कंपनीज के हों या फॉरेन गवर्नमेंट के हों. ओके, दैट इज नॉन एज फॉरेन सिक्योरिटी. सो कॉमर्शियल बैंक्स आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. आरबीआई तो हमको समझ में आ गया कि आरबीआई मनी सप्लाई क्यों है, सप्लायर क्यों है, बिकॉज आरबीआई नोट्स इश्यू करता है. मगर कॉमर्शियल बैंक मनी का सप्लायर क्यों है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उधार पैसे देता है, और आरबीआई जो मनी लोन देता है वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में देता है, और डिमांड डिपॉजिट मनी की सप्लाई में इंक्लूड होते हैं. मैंने बताया था आपको, दैट इज वाई कॉमर्शियल बैंक इज आल्सो नॉन एज सप्लायर ऑफ मनी. कॉमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. सेंट्रल बैंक के पास नोट इश्यू करने की अथॉरिटी तो नहीं है,
द कॉमर्शियल बैंक कैनॉट इश्यू नोट्स, कॉमर्शियल बैंक नोट्स और कॉइन्स इश्यू नहीं कर सकते, yet they are the suppliers of money as they create money by way of demand deposit. As I told you, commercial banks can also create money in the economy in the form of demand deposit. These deposits serve as supply of money because these are stackable deposits. As we have already studied, demand deposits are comes under the supply of money because these are stackable deposits. And I have also told you the definition of checkable deposits, which is written again here. People can withdraw or transfer money by writing check. Money created by the commercial bank by way of demand deposit is called bank money. So underline this point. The question may come, what is bank money? So bank money is the money which is created by the commercial bank by way of demand deposit. Next page, page number 140. Government is the third source of money supply in the country. Now government is also the supplier of money. In India, the Ministry of Finance issues 1 rupee notes and coins of all denominations. This was also told by me before. The government is also supplier because the Ministry of Finance issues all the coins and 1 rupee notes in India. Now the next is bank money and high powered money. What is bank money? We have already studied. The credit created by the commercial bank, the demand deposits created by the commercial bank by way of loan is known as bank money. Bank money refers to the demand deposits of the people with the commercial banks. उसको हम बैंक मनी कहते हैं. हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी is the sum total of currency held by the people, vault cash of the commercial bank and cash reserves of the commercial banks with the RBI. This is called monetary base or base money in the economy. तो हाई पावर्ड मनी का मतलब है जितना भी टोटल कैश अवेलेबल है कंट्री के अंदर. अब यहां पर कैश सबका लिया जाएगा. कैश किसके पास हो सकता है? पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास. इन तीनों के पास जितना भी कैश है वो सारा हाई पावर्ड मनी कहलाएगा. गवर्नमेंट के पास नहीं, सेंट्रल बैंक के पास और कॉमर्शियल बैंक के पास. बिकॉज गवर्नमेंट इज इटसेल्फ ए कंट्रोलर. तो हाई पावर्ड मनी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना कैश मनी होता है वो बहुत ही क्विकली स्पेंड हो सकता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर होती है. चेक आपसे कोई एक्सेप्ट करे ना करे मगर कैश हमेशा एक्सेप्टेबल होगा, ये आप लोग जानते हैं. दैट इज व्हाई द कैश अवेलेबल विद द पीपल, करेंसी अवेलेबल विद द पीपल एंड कॉमर्शियल बैंक एंड RBI is known as monetary base or high powered money. Note, while currency held by the people is a part of money supply, vault cash of the commercial bank as well as cash reserves of the commercial bank with RBI are not a part of money supply. As already noted, stock of the money held by the suppliers of money is never treated as a part of money supply. So this is true. We know that high powered money का मतलब ये थोड़ी है कि ये सप्लाई ऑफ मनी में आ गया, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ कौन सा कैश आता है? जो कि पब्लिक के पास है. RBI के पास जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा जमा है या पब्लिक का पैसा जो कॉमर्शियल बैंक के अंदर जमा है वो तो ठीक है. RBI के पास जो पैसा जमा है वो मनी की सप्लाई में नहीं आएगा और जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं वो भी नहीं आएंगे. नाउ एक चीज आई है इसके अंदर, वॉल्ट कैश. वॉल्ट कैश का मतलब होता है जो कैश बैंक के पास कैश फॉर्म में पड़ा है उनके वॉल्ट में. वॉल्ट मतलब लॉकर, तिजोरी. उनके अंदर, उनके वॉल्ट के अंदर जो पैसा है वो सारा वॉल्ट कैश कहलाएगा.
HOTS. State the principal components of money supply. That we have already read. The principal components of money supply are currency, notes plus coins held by the public, demand deposits of the people with the commercial banks, and also other deposits, demand deposits with RBI of domestic and foreign institutions other than of the government of the country, and commercial banks within the country. ये बार बार रिपीट हो रहा है, अपने को अच्छी तरीके से आ गया. P plus DD plus OD are the principal components of money supply. Second HOTS is, why are cash deposits of the government and of the commercial banks with the RBI not treated as a part of money supply? So this is again repetition, क्योंकि ये सप्लायर्स का पैसा है और सप्लायर्स का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता. Because government and commercial banks are creators, suppliers of money, and money held by the creators, suppliers of money is never treated as a part of money supply. So that is the HOTS number 2. Now you have to do all the questions